रिप्रेजेंट करे थे. सपोज in that presentation we are discussing mod a under root a into under root b equal to under root ab if and only if a greater than 0 and b greater than 0. Sorry for the errata, but today we will discuss how to understand this formula in context of complex numbers. Suppose we have given under root a under root b equal to under root ab. So this is true if and only if when at least either of a or b is positive or 0. Means this formula is true if and only if either a is positive or b is positive, or at least one of them is 0. So हमने क्लियर कर दिया अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर द रूट ए बी. ट्रू इफ एंड ओनली इफ इधर a is positive or at least one of them a और b is positive or at least one of them is 0. और हमने उसमें डिस्कस किया था क्योंकि हम बता रहे थे अगर आइटा इक्वल टू अंडर रूट -1 है तो iota square comes out to be -1. This is the nature of iota. So we know we can express iota square as iota into iota, which is equal to -1, and value of iota equal to -1. So under root -1 into under root -1, which equal to, we will solve left hand side of the equation, so which comes out to be under root -1 into -1, which comes out to be positive 1, which means 1 equal to -1. According to formula, if under root a into under root b equal to under root ab. बट फॉल्ट इस फॉर्मूले में ये है कि अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी होगा तो उसी केस में होगा जब एटलीस्ट ए और बी में से कोई एक पॉजिटिव होगा या ए एंड बी में से कोई एक 0 होगा, और बोथ मस्ट बी पॉजिटिव. नो सॉरी, अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी होगा तो एटलीस्ट किसी एक नंबर को इसमें से पॉजिटिव होना होगा in order to this formula to be true. So अगर हम इस केस में डिस्कस करेंगे कि आइटा स्क्वायर हमने एक्सप्रेस कर दिया -1 आइटा इंटू आइटा इज इक्वल टू -1 एंड अंडर रूट -1 कॉमन रूट -1 विच इक्वल टू -1, एंड इस केस में a और b दोनों ही नेगेटिव हैं, लेस देन 0 हैं. सो दिस फॉर्मूला इज नॉट होल्ड ट्रू फॉर those numbers where both a and b is negative. This formula is true if under root a into under root b equal to under root of a into b. This formula hold true if and only if any one of a or b is positive, or if any one of a or b is 0, or this formula holds true if a and b is positive. So इरेटा क्लियर्स, आई होप हमने इरेटा क्लियर कर लिया है कि अगर अंडर रूट ए
इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी है, तो एटलीस्ट any one of them must be positive or zero in order to hold this true. This formula is not correct for both A and B. So finally means this formula is not true if both A and B is negative, means both A less than 0 and B less than 0. So finally under root A into under root B equal to whole under root AB will not hold true if A is less than 0 and B is less than 0. This means this is wrong. If we have A less than 0, B less than 0 means both number are negative, then this equality does not exist. This formula does not exist to be equal.